Hello guys, welcome back to Coding Mode. In the previous lecture, we worked on the simple maps. But from this video onwards, I would like to, speak in English as well as in Hindi so that most of you people can understand the lectures properly. Okay? So, इस वीडियो में हम लोग जो है कि इसी गूगल मैप को आगे और पढ़ लेंगे, लेकिन पिछले वाले वीडियो में हमें थोड़ा सा इसमें एक माइन्यूट सा प्रॉब्लम रह गया था कि हमारा जो मार्कर है वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे है जो हम चाहते थे कि हमने यहाँ पे लोकेशन जो सेट किए दैट इज श्रीनगर और हमारा मार्कर एग्जैक्टली वही है, बट ये हमारी जो लोकेशन है इसको जूम करके शो नहीं कर रहा है. फॉर दैट वी हैव टू काइंड ऑफ क्लिक ऑन इट और हमें जूम होके हमारी लोकेशन जो है कि नजर आने लगेगी. बट व्हाट वी वांट कि ये खुद से बाय डिफॉल्ट जूम होके हमें श्रीनगर ही डिस्प्ले करे. फॉर दैट थिंग व्हाट वी विल डू इज वी विल गो हियर एंड एट द जूम ऑप्शन एंड कितना जूम करना है दैट इज 10f मैं लेती हूँ. लेट्स रीरन इट अगेन एंड यू विल सी द प्रॉब्लम इज गॉन. फाइन यू कैन सी कि हमारी जो मार्कर है वो भी एग्जैक्ट पोजीशन पे है और हमारी जो श्रीनगर वाली लोकेशन है वो भी जूम होके हमें डिस्प्ले हो गई है. बट द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमारे जो मैप्स है इसके बहुत सारे टाइप्स है. नॉट वी डोंट ओनली हैव अ सिंपल नॉर्मल मैप. हमारे पास हाइब्रिड है, सैटेलाइट मैप है और हमारे पास थ्योरियन मैप है. तो ये सारे मैप हम करेंगे, लेकिन सारे के सारे मैप हम इसी एक वीडियो में कवर कर लेंगे और स्टेप्स जो है सबके लिए सेम है, बिल्कुल सिंपल है. 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. तो पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना है दैट इज वी हैव टू क्रिएट मेन्यू. हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे मैप्स के लिए. सो अपनी एक्टिविटी में जाके व्हाट वी विल डू, रिसोर्स पे राइट क्लिक करके न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आप लोग मेन्यू लिखेंगे और वैल्यूज में हम लोग मेन्यू सेलेक्ट करके अपना मेन्यू फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं. हमारा मेन्यू फोल्डर मेन्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है. इस पे राइट क्लिक करके हमें एक मेन्यू फाइल बनानी है. ओके, सो दिस इज मेन्यू रिसोर्स फाइल. आई विल क्लिक ऑन दिस और इसका नाम जैसे मैं रखना चाहूंगी दैट इज मैप ऑप्शंस. ओके, और इसमें हम लोग एक एक करके अपने आइटम्स जो है कि ऐड करते जाएंगे. हमारे पास 4 चीजें हैं, 4 आइटम्स है. पहला हमारा नॉर्मल मैप है, हमारा हाइब्रिड मैप होगा, हमारा सैटेलाइट और थ्योरियन मैप होगा. सो लेट्स ऐड द आइटम्स वन बाय वन. द फर्स्ट इज आइटम एंड इसका आईडी हमारा आ जाएगा और हम लोग इसमें आईडी सेलेक्ट करके नॉर्मल लिख रहे हैं और हमारा टाइटल, और इसमें हमारा टाइटल होगा दैट इज नॉर्मल मैप. और इसके अलावा हमारा यहाँ पे ऐप में हमारा एक्शन होगा यहाँ पे लेट्स फर्स्ट ऑल्ट एंटर टू रिमूव द एरर. और हमारे यहाँ पे एक्शन जो है कि शोज एक्शन नेवर. इसी को कॉपी करके हम लोग और 3 आइटम्स बना लेंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा आइटम क्रिएट हो रहा है. ऑल 4 आइटम्स आर हियर, बट यहाँ पे इसका नाम अब हाइब्रिड होगा, हमारा दूसरा मैप. और यहाँ पे हमारा मैप जो है दैट विल बी द सैटेलाइट मैप. ओके, एंड दिस वन इज द थ्योरियन मैप. ओके, इसी तरह यहाँ पे हमें नाम भी चेंज करना होगा. दैट इज द हाइब्रिड वन. This one, this guy basically is the satellite, and the last one is a terrain map. Okay, we are done with this thing. Let's cross this and check mark this one. So हमारा पहला वाला ऑप्शन हो गया. अब हम लोगों का जो सेकंड काम यहाँ पे रहता है दैट इज कि जावा में जाके हमें इस मेन्यू के लिए 2 मेथड्स को क्रिएट करना है. वी हैव टू ऐड द मेथड्स. एक हमारा ऑन क्रिएट का मेथड होगा और दूसरा हमारा ऑन आइटम सिलेक्टेड वाला मेथड होगा. तो just go there. These 2 methods will support the menus. So कंट्रोल ओ प्रेस करके मेरे ओवरराइड मेथड्स आ जाएंगे. उसमें से आई हैव टू फाइंड ऑन क्रिएट ऑप्शन
Yeah, this guy is here, option menu. I will click on it. मेरा मेथड आ गया और इसमें मुझे अपना मैप जो है उसको लिंक करवाना है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है. So for that, just go here and use the menu inflator. Menu inflator. Inflator equal to get menu inflator. और इसमें हमारा ये चला गया और inflator dot inflate और इसके अंदर हमारा आ जाएगा जो हमने मैप क्रिएट किया हुआ है menu dot map options. Okay, it's done. तो हमारा एक मेथड आ गया, that is this one. Another method is again control O और हमारा on item on option item selected is here मेरा ये मेथड और इसमें मैं स्विच केस यूज कर रही हूँ. स्विच केस और यहाँ पे हमारा आइटम डॉट गेट आइटम आईडी और इसके अंदर एक एक करके I will choose the cases. The case 1 will be r dot id dot पहला हमारा जो id यहाँ पे that is a normal map. What is the get item id and here it will goes map dot set map type और ये हमारा गूगल मैप है. गूगल मैप dot कौन सा वाला normal वाला and it will include the return type that is gonna be true और यही मेरा केस सेकंड यहीं पे हमारा क्रिएट हो जाएगा. I will copy this, paste it for the hybrid map and here it is gonna be map type, it will be the hybrid. Okay, the same is going for the third map which is my satellite map and the map type is here the map satellite. Okay, the last one is my terrain map. Okay, the last will be its default case. Default is going to be return super on option selected and it will take the item and of course the yes. Is there anything else that we need to do? Already it was here, sorry, we don't need to create it. Okay, the next step is done. We created the menu, we added two methods for menu creation and for when a user will click on any item. The third is replace the fragment activity by the app compat activity. Where is the fragment activity? We just check it. यहाँ हमारा fragment activity है, इसके बदले हमें app compat activity को choose करना है. Let's run the program. We are all set. Okay, you can see the three dots here. You click on it
and you will see the options. The first one is a normal map. If I click on the hybrid, तो मेरा hybrid map show हो जाएगा. If I click on the satellite, it's showing the satellite map. Okay, all type of maps are available. Here the last one is a normal map. Okay, hope you like this video. आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे टॉपिक्स को देखने के लिए, उनको समझने के लिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. So take care.